Now we come to the vitamin B12, which is known as a cyanocobalamin. Central portion of the first we'll see the structure, and again I'm reminding you that don't go into the detail of learning the structure. I only show you the structure to have in your mind the picture that how the B12 look, or how the folic acid look, how the niacin look, how the vitamin C looks. So ये कुछ पता होना चाहिए कि क्या है, कैसा होता है. Otherwise, there is no need to learn the structure to draw the structures. Central portion of the molecule consists of four reduced pyrrole rings surrounded by a cobalt atom. The central structure is called corin ring. A cyanide group is coordinately bound to the cobalt atom, and then it is known as the cobalamine. Here you can see the structure. Okay. This is the structure. Four pyrrole rings are there and they are linked to the cobalt. Here you can see the ribose 5-phosphate, and this is the, you can see here the corin ring. So in this way the cobalt, it is attached to the cyanide, and therefore it is known as a cyanocobalamin. You can see here that cobalt, it is linked to the cyanide, cyanide, and therefore it is known as a cyanocobalamin. This is the corin ring having the four pyrrole rings are there. जैसे आपने porphyrin में देखा था, pyrrole rings थे, एक ये है, एक ये है, एक ये ring है और एक ये ring है. 1, 2, 3 and the 4, right? And in the center there is a cobalt, and this cobalt is linked to the cyanide. Other part of the structure, it also contains ribose phosphate. So you should know that why it is known as a cyanocobalamin, because it contains the cyanide. Types of B12. Cyanide group may be replaced. Cyanide की जगह अगर OH हो सकता है, NO2 हो सकता है, chloride, SO4. तो अगर OH group होगा, it will call the hydroxycobalamin, nitrotocobalamin, chlorocobalamin, sulfatocobalamin. ठीक है. तो इतने सारे cobalamin depending upon the groups which are attached to the cobalt. Again देखो कितने सारे foods हैं, eggs हैं और salmon है, yogurt है, milk है, beef है, बहुत सारे, and these are the sources of the B12. Here you can see the recommended dietary allowances. Synthesis. B12 or cobalamin is a vitamin that can only be synthesized by microorganisms which in humans are localized in the colon. ठीक है. अब colon बिल्कुल नीचे का part होता है, वहाँ absorption होती नहीं है. Synthesis होती है, synthesis take place in the human, but the vitamin cannot be absorbed. The synthesized vitamin by the microorganism, it cannot be absorbed because colon is a lower part of the intestine. Human cannot absorb this as it is made in the colon downstream from the small intestine. Ileum से नीचे होती है. Cobalamin has been taken up by the food, and only animal dry food delivers sufficient amount of B12. अभी आपने पिक्चर में भी देखा, लिवर था, बीफ था, सैल्मन थी, दूसरी फिशेस थी. So mainly the animal food is a good source of B12. Main storage site is liver. Metabolism, absorption पे आते हैं. Vitamin B12 is absorbed from the ileum. अच्छा, अब गौर से देखना.
Two binding proteins are required for absorption of B12, and they are cobalamin, intrinsic factor, right? Cobalamin, what is cobalamin? A binding protein secreted in the saliva. Intrinsic factor and presence of HCl. These three are important for the absorption of B12. What are important? Cobalamin, intrinsic factor, and presence of HCl. These three are important. Now we'll see. Intrinsic factor, it is a where intrinsic factor is present. थोड़ा थोड़ा सबका description भी देख लेते हैं ना कि ये होते क्या है. It is a constant of normal gastric juice. It is secreted by the parietal cells. It is a glycoprotein and a constituent of gastric mucoprotein. Gastric acid, HCl and pepsin releases the vitamin B12 from protein binding in food. Gastric acid HCl, that is the HCl which is present in the gastric acid, and pepsin, दो चीजें HCl and pepsin releases the vitamin B12 जो कि food में होता है and make it available to bind the salivary protein cobalamin. HCl और पेप्सिन क्या करते हैं? ये फूड से जो भी आपने खाना लिया है, गोश्त लिया है, जो भी फूड लिया है जिसमें B12 है, उस B12 को फूड से रिलीज करते हैं और इसको बाइंड करते हैं salivary protein cobalamin के साथ. Here you can see. This is the cobalamin. Yellow box is the cobalamin. ठीक है? And this is the B12. Red circle is the B12. HCl and pepsin ये रिलीज करते हैं डाइटरी फूड में जो B12 है और इसको बाइंड करते हैं cobalamin के साथ. ठीक है? अब ये जा रहा है duodenum में. In the duodenum, intrinsic factor binds with the B12. But intrinsic factor can only bind B12 when cobalamin is released. So first the cobalamin is released and then the intrinsic factor, it binds the B12. The attachment of the intrinsic factor B12 complex to the receptor ileum, अब ये देखो ये ileum से attach होगा और ये reabsorb होगा. B12 is released in the presence of calcium and a releasing factor. Calcium and a releasing factor is necessary for the releasing of the vitamin B12 in the ileum. Intrinsic factor is detached. ये देखो अलग हो गया ना. Intrinsic factor is detached. Probably enters the lumen of ileum, absorbed into the mucosal cell. ये देखो ये जो है B12 अब इलियम में इंटर हुआ, इसकी कैविटी में ल्यूमेन में इंटर हुआ and probably it is reabsorbed. उसके बाद ये ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन से बाइंड करता है ट्रांसकोबालामाइन. देखो सबसे पहले प्रोसेस फिर से देख लो. डाइटरी फूड के अंदर जो आपने खाना खाया है उसके अंदर जो B12 है वो कैसे रिलीज होगा? बाय द HCl एंड द पेप्सिन which is present in the stomach. HCl आपको पता है गैस्ट्रिक जूस में होता है. ठीक है? This releases the B12 from the food और इसको cobalamin के साथ अटैच हो जाता है. ठीक है? In this way, now it enters the duodenum. Duodenum में जाके this cobalamin is released and the intrinsic factor, it binds with the B12. When it binds to the B12, then this
complex helps in the absorption of the B12 in the ileum. It enters the ileum and this is released. Intrinsic factor is released. Calcium helps in the releasing of the intrinsic factor. So this B12 now enters the ileum. It enters the cavity of the ileum and then it is absorbed and it binds to the transporting protein which is known as a transcobalamin in the portal system and carried to the liver for storage. In the duodenum, Cobalamin is hydrolyzed, अभी मैंने आपको बताया, releasing the vitamin for binding to the intrinsic factor. फिर absorption होती है. B12 is absorbed from the distal third part of the ileum while specific binding site receptors में जाता है. ठीक है, आपने अभी देखा था receptors के साथ वो attach हुआ है, फिर lumen में enter हुआ है. Right, removal of the intrinsic factor. Calcium ions मैंने आपको बताया, they help in the releasing of the intrinsic factor from B12 and a releasing factor. ये releasing factor जो है ये कहाँ से निकलता है? ये duodenum से निकलता है. तो देखो कितने मजे की बात है कि duodenum से जब B12 इलियम की तरफ आ रहा है तो releasing factor उसको intrinsic factor को अलग कर देता है. And now it is properly absorbed in the ileum. B12, ये देखो, releasing factor which is secreted by the duodenum and the calcium ions they detaches the intrinsic factor. अब ये lumen में enter हो गया है and now it is absorbed and it binds to the transporting proteins transcobalamin 2 and it is carried to the liver for storage. About 65 to 75% of the B12 excreted into the bile is actually reabsorbed as a result of an extremely efficient enterohepatic circulation. यानी बाइल में जो चीज आती है वो लिवर में जाती है दोबारा से and this is known as a enterohepatic circulation. मैंने आपको बताया था ना कि B12 is transported in blood in association with specific proteins which are known as transcobalamin 1, 2 and 3. इसमें जो physiologically important है वो transcobalamin 2 है. Vitamin B12 is transferred to transcobalamin 2 which is secreted into the circulation. तो अब जो कि ये vitamin B12 transporting protein transcobalamin 2 से bind करता है and which is secreted, this transcobalamin 2 it is released, it is secreted into the circulation. अब एब्जॉर्ब हो गया, सर्कुलेशन में आ गया, सब कुछ हो गया, अब उसकी एक्सक्रीशन होगी. ठीक है, विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर. अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो उसकी एब्जॉर्बेंस नहीं होगी इलियम में. ठीक है, इट मूव्स थ्रू द इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीटेड इन द स्टूल क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई है, इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं था. B12 is a water soluble vitamin और आपको पता है कि water soluble vitamin जो होते हैं वो ज़्यादा स्टोर नहीं होते हैं and the excessive amount it is excreted in the urine. Biologically active forms of B12. अब आ जाओ इसके functions पे, biochemical role पे. B12 is involved in cellular metabolism in two active coenzyme forms. Methylcobalamin, 5-deoxyadenosylcobalamin. These are the two forms in which the B12 function. B12 also has a separate biochemical role
अनरिलेटेड टू फोलिक एसिड। अच्छा, कुछ काम तो इसके और फोलिक एसिड के कंबाइन होते हैं और कुछ स्पेसिफिक B12 का है, जिसमें से है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन द माइलिन शीट that surround the nerve cells, and therefore it plays a very important role in the nervous system. ठीक है, यानी इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन द माइलिन शीट दैट सराउंड्स द नर्व सेल्स। जो इम्पोर्टेंट रोल है इसका यार, वो पहला है मिथाइल मेलानाइल कोए की कन्वर्जन टू ससिनाइल कोए। Vitamin B12 is required as a coenzyme for the conversion of methyl malonyl CoA to succinyl CoA by the enzyme methyl malonyl CoA mutase, and this in the degradation of propionate. ये actually कैसे बनता है? विटामिन B12 को एंजाइम, ये जो है ना एल मिथाइल मेलानाइल को ए, ये बनता है प्रोपियोनिक एसिड से, प्रोपेनाइल को ए से, प्रोपियोनेट से, 3 कार्बन का कंपाउंड प्रोपिनेट। ठीक है, प्रोपिनेट जो है जब ये मेटाबोलाइज होता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है एल मिथाइल मेलानाइल को ए, एंड दिस L-methyl malonyl CoA is converted to succinyl CoA. अच्छा, अब देखो स्टोरी क्या हुई। propionate is converted into L-methyl malonyl CoA, and L-methyl malonyl CoA is converted to succinyl CoA by the enzyme methyl malonyl CoA mutase। ये देखो, प्रोपेनाइल कोए बेशक वो आइसोल्यूसिन से आ रहा हो, अमाइनो एसिड ल्यूसिन से आ रहा हो, थ्रियोनिन से आ रहा हो, मिथियोनिन से आ रहा हो, या फैटी एसिड से आ रहा हो, या कोलेस्ट्रॉल की साइड चेन की ब्रेकडाउन से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा है प्रोपेनाइल को ए, इट इज कन्वर्टेड टू मिथाइल मेलानाइल कोए, then methyl malonyl CoA is converted to L-methyl malonyl CoA। ये देखो म्यूटेज है, यहाँ पे म्यूटेज काम करता है, and then it is converted into methyl gluconyl CoA and succinyl CoA। ठीक है, ये succinyl CoA में फाइनली प्रोपेनाइल CoA जो है ना, ये succinyl CoA में कन्वर्ट होता है, and through the conversion of methyl malonyl CoA। अच्छा, फर्स्ट करो कि द एंजाइम इज डेफिशिएंट, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, व्हाट विल हैपन? एल मिथाइल मेलानाइल कोए विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल मैलोनिक एसिड। रिमेंबर दिस, एल मिथाइल मेलानाइल कोए, if it is not converted to succinyl CoA, it will be converted into methyl malonic acid। Now, अब इसके ससिनाइल कोए के 2 इम्पॉर्टेंट काम हैं। इट इज यूज्ड इन द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड इट इज यूज्ड इन द TCA साइकिल विच इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, काफी एनर्जी देता है आपकी बॉडी को। ससिनाइल कोए प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस and TCA cycle to generate energy. In B12 deficiency, methyl malonic acid accumulate। अभी मैंने आपको बताया ना कि methyl malonyl CoA then is converted into methyl malonic acid and which is excreted in urine। Methylation of homocysteine to methionine, and I told you that the homocysteine is not a good marker and a level of homocysteine should be maintained. If the level of homocysteine is increased in the blood, then it is an indicator of cardiac dysfunctioning। क्यों? इसलिए कि आर्टरीज को डैमेज करते हैं, उनको हार्ट करते हैं और ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करते हैं। So, methylation of homocysteine to methionine
Conversion, it means that conversion of homocysteine to form methionine, so that the balance of homocysteine and methionine should be maintained. This required tetrahydrofolate as a methyl donor or methyl carrier, and the reaction is catalyzed by methionine synthase, that is the enzyme which is synthesizing methionine. Methionine synthase catalyzes the conversion of homocysteine to methionine. Methionine, what is a function of methionine? It is it is required for the formation of S-adenosyl methionine. What is S-adenosyl methionine? It is the active form of methionine, and it is a methyl donor. It donates the methyl group for synthetic reactions, for DNA synthesis, RNA synthesis, different hormone synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस. सो देखो इसके दो काम हो गए. मिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन to control the level of homocysteine as well as the formation of methionine. It will provide the methyl group, because S-adenosyl methionine is the active form of methionine and it is a very good methyl group donor. What is the use of methyl group? Methyl group is used in the synthesis of DNA, RNA, hormones, proteins and lipids. Here you can see, ये वाला स्टेप देखो. ये ओवरऑल मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि पता चल जाए कि देखो ये डीएनए की सिंथेसिस कर रहा है. ठीक है. अच्छा, अब आप ये देखो कि होमोसिस्टीन is converted to methionine, and this requires the B12 methyl cobalamin, right? B12 is required by ribonucleotide reductase. This is the enzyme for the conversion of ribonucleotide to deoxyribonucleotide. Deoxyribonucleotide कहाँ होती हैं? DNA में होती हैं. It means that B12 is required for the synthesis of deoxyribonucleotide so that the DNA could be synthesized in a proper way. Along with folic acid, B12 plays a role in DNA synthesis. And in this way, we can say that along with folic acid, B12 plays a role in DNA synthesis. B12 is required for proper red cell formation. It is also required for the neurological functions. In the next lecture, we will discuss the deficiency symptoms of